Good evening. Good evening to all the viewers. I would like to welcome everyone to Genius Lakshya. You all are heartily welcome to Genius Lakshya. Today's presentation will be on Buddhism and teachings of Buddhism. How Buddhism came into existence, where we will discuss the life, the journey, and the teaching of one of the greatest monks or God, Gautama Buddha. So, today our topic will be on life, journey, and teaching of Gautama Buddha. I would like to know your understanding about religion today. Jai Sri Ma'am, Bhavisa ji, Sujal ji, Devang ji, Mayur ji, Basavada ji, Krupadave ji. Good evening to all of you. Good evening to all of you. So today our topic is Buddhism. India is a land of spirituality. India is a land of religions. India is a mother of spirituality. India is a secular country. We do not have any official religion in our country. All the religions are equally protected. All the religions are equally emphasized. All the religions are equally respected in our country. So India is a secular country. This country has given what is spirituality to all the countries in the world. So my first question to you is whether God is a form or it is without a form. मतलब मेरा कहना यही है कि हम स्पिरिचुअलिटी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम ये जानते हैं कि जो भगवान है उनका कोई आकार है कि नहीं है. शॉर्ट में आप आंसर बताइए, यस और नो. Whether God has form or it is formless. Answer quickly, yes or no. मतलब हम लोग we go to temple, we worship to God. In front of us there is a statue. It is a form. It is a form. And if we go, yes, the answer says that it is yes. It is form. It has form. Okay. Only one answer. Then Sujal Sujitra ji, I would like to know whom do you worship? Again the answer is again negative. Basavada ji, no. It has no form. Okay, Krupadave ji, it can be anywhere in any shape. How it is possible that, for example, 5 and 5, 5 plus 5, 10 in India, and 5 plus 5, 45 in Japan, 5 plus 5, 195 in America. So universal truth is always same and everywhere it is equal. Somebody is saying yes, somebody is saying no, and somebody is saying it can be anywhere. That means if it is universal, it should be same across the world. If it is not universal, that means it is not truth. Right? If
5 and 5, 5 plus 5, 10, so 10 across the world. You cannot say that 5 and 5, 5 plus 5, 10 in India and 5 plus 5, 35 in Japan. It's not like that. If it is universal, if it is accepted across the world, it should be one. The belief system should be one. But how come there is a discrimination of belief? Who has made it? Who brought this discrimination? Is a matter of great debate and discussion. But yes, everyone is correct according to himself or herself. Because belief is different from person to person. If you are following Buddhism and if I am following Jainism, who is correct and who is right? We can have a debate upon it. If you are following Christianity and I am following Islam, who is right? Again, Rupa-Ji, you are telling that universal means accepted by everyone. It does not mean that it is same for all. Like money is universal, but form of money is different in all countries. Very good logic. Very good logic. But if you will study, analyze the deeper insight of all the religions without being biased, if you are a Hindu and if you learn that no, other religions are different, and if you will learn as a Hindu to other religions, then you will not get the real gist of religion. So the world is going through a lot of challenges, lot of problems, and each and every person is cultivating his or her own opinion, and every human being in one fine day comes and says that I am God, please worship to me. And many thousands of people become his or her followers. Human brought this discrimination, both are right in their perspective. From my answer, in short and simple, you have to study it, you have to learn, you have to live, you have to experience each and every religion for at least for 1 year, then you will understand are they same or different. You have to learn Christianity and you have to follow it for some time. You have to learn Jainism. You have to follow it for some time. You have to learn Buddhism. You have to follow it for some time. Don't think that I am a Hindu and I should not do that. And I am happy to share with you that I have gone through almost all the religions in the world during my studies of spirituality, and I have been certified as the gold medalist of spirituality, but I don't dare to debate on the topic because it is not a topic of debate. I have experienced almost all. Jainism I have followed for some years, Buddhism I have followed for some years. So this journey is, spirituality is more than 15 years. But I have never tried to debate upon it because anyone can debate upon religion. Anyone can give his or her opinion, and the person is absolutely correct according to him or her. So I never do debate. So this is only from my side. My first question,
for you is that let's have some quiz question, then we'll go for the Buddhism. Is there any train in India to go to Sri Lanka? Yes or no? Very foolish question. Is there any train? Good evening, I came. Is there any train started by the government of India to go to Sri Lanka? Quickly give me the answer. I will ask you so many questions. Quickly. Yes, there is a train. Government of India has started a train, and the objective of the train is to Devan Dolaria. There is no train. You say that there is no train. No train. Okay. There is a train accompanied by a plane. Listen to me carefully. There is a train accompanied by a plane to Sri Lanka. The name of the train is Ramayana Express. Dear friends, Indian Railways is one of the largest networks in the world. If you know the answer, which are the three private trains have been operated by IRCTC? Give me the answer. IRCTC has been operating three private trains. Private trains, three. Please give me the name of the three private trains, guys. So, the Ramayana Express is a train. It connects all the places which are connected to Ramayana. And we know Sitamarhi is there, Ayodhya is there, right? So various places are connected with the Ramayana. So there are many circuits. I hope you must be aware of the circuits. Circuit means in one particular train, if you will travel the train, for example, Buddhist circuit will connect you from all the places where Gautama Buddha had been. You will connect where Gautama Buddha passed away. He gave his speech, his palace, all the places he visited. So this is called a circuit. So Buddhist circuit is one of the most important circuits of our country. If you will travel or visit the Buddhist circuit, then you will get an opportunity to know the art, the culture, the architecture, the literature, lives, teachings, monuments of Gautama Buddha. And my question was, which train goes to Sri Lanka accompanied by a plane? The name of the train is Ramayana Express. The Ramayana Express connects all the places which are connected with the Ramayana, and it goes to Chennai. From Chennai you can fly to Sri Lanka. Okay, so this question is very unique and it has already been asked in many examinations. So again, how do we connect Gujarat with Buddhism is very, very important, because when the Chinese traveler came to India, he visited many places. Also he visited so many places of India, and he has written in his book that there is a very strong connection
of Gujarat and the Buddhism. You will find many monasteries in Gujarat associated with Buddhism. You will find many hills in Gujarat associated with Buddhism. Also, you will find many pilgrimages in Gujarat associated with Buddhism. So, there is a close connection between Buddhism and our Gujarat state. Can you give me the answer? Which is one of the most famous caves in Gujarat associated with the Buddhism? And it is at Junagadh. Because we know that, and we will discuss in our presentation that Ashoka, one of the greatest emperors of the world, was a follower of the Buddhism. After a great war, the Kalinga War, he transformed himself, because Kalinga War was a bloody war. Many soldiers lost their lives, and blood threw, and it became a small river. This horrible scenario, this horrible situation transformed Ashoka from such a great king, and he followed the Buddhism, which is the religion of compassion, which is the religion of love, which is the religion of peace, which is the religion of bliss, where each and every creature is created. Okay, I am getting the answer. Sujal Sujitra ji, Sana Caves, very good. Yes, you are right. Khambalida Caves, very good. You are right. And in Junagadh, very important. I am sure you must have been there. Well known. Junagadh. Okay. Yes. Sana Caves and Khambalida Caves, both are very important. Also, give me the names of a hill which is near to Rajkot. It is near to Rajkot. You will find nearby Rajkot Bhavnagar area. There is a hill, and that hill is associated with the Buddhism. Can you tell me the name of the hill? Please give me the answer. Okay. So Ashoka was one of the greatest emperor, and he did everything to spread the teachings of the Buddhism. Even he sent his daughter and son to spread the message of Buddhism. So, Buddhism is one of the greatest religions in the world. The highest followers are found in the world. It is Christianity. The second one is Islam. Third one is Hinduism. And fourth one is Buddhism. The fourth one is Buddhism. So Buddhism is one of the largest religions in the world. Vasavadaji, Palitana, you are right, sir. Palitana is also associated with Buddhism. Absolutely, you are right. Then Devan Galoria ji, Analgarh hill. Okay, how do you connect this hill with Buddhism? Analgarh hill. Where is it and how do you connect it? Write down in the comment. Okay, so many places are there. Talaja hill is associated with Buddhism. Taranga hill you will find in Mehsana. It is also associated with Buddhism. And there are many monasteries
When the Chinese traveler Wensan came to Gujarat, he has written that in Bodnagar near Ahmedabad, many monasteries were there and many thousand monks were practicing their spiritual practice there. So in Bodnagar, the Buddhist monasteries are found and Than monasteries in Bhuj are very, very well-known monasteries. Monastery is a place where the monks practice their spiritual awareness. Okay. Also, what do you mean by Buddha? If you give me the answer, it will be great for me. In my previous presentation, I gave the meaning of Buddha. What do you mean by Buddha? Buddha means what? Because Gautama Buddha says that everyone is Buddha. He has never told that I am the only Buddha, nobody can be Buddha. No. Gautama Buddha says that each and everyone is a Buddha. So can you tell me what is the meaning of Buddha? What do you mean by Buddha? What is the meaning of Buddha? Buddha means the enlightened one. Buddha means awakened one. Buddha means is a person who thinks that he can liberate himself, he can get rid of the cycle of birth and death, and he does the practice for it, and he attains it, is a Buddha. And Gautama Buddha says that everyone can do it. So he has encouraged in his teachings, in his sermons, that if you want to be enlightened, the enlightened one, absolutely right. Sujal Sujitra ji, yes, you are right, the enlightened one. And Gautama Buddha says that we must take the charge of our life, is Buddha. You should be accountable to your work and words, then you are Buddha. If you take the charge of your life and you start your journey to get salvation, then you are Buddha. So everyone is Buddha according to Gautama Buddha. There is fact about Buddhism that like other religions, Buddhism do not have any single holy book. There are many literatures are there in Buddhism. Yes, Krupa ma'am, you are right. We get information, we get knowledge from various scriptures which was initially written in the Pali language. Pali is one of the classical languages in the world. It is equivalent to our classical language, the Sanskrit language. And during those days when Gautama Buddha was spreading his knowledge, was meeting the people, at that time he was teaching in Pali language. In UPSC is also there is a Pali language. UPSC में क्या होता है, आपको एक लैंग्वेज चूज करना होता है. You have to choose one language apart from English. So Pali is one of the languages. बहुत सारे लोग पाली लैंग्वेज को चूज करते हैं. बहुत छोटा है, उसका सिलेबस बहुत कम है. I have seen it. बहुत कम सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से सीखा जा सकता है. तो पाली लैंग्वेज में पूरा जितना भी त्रिपिटक है, जितना भी गौतम बुद्ध का जो काउंसिल हुआ था, मेजरली जो 4 काउंसिल हुआ था, जिसमें ये डिस्कशन किया गया था कि हाउ कैन दिस
teaching of Buddhism can be spreaded after the death of Gautama Buddha, because during his preaching and sermons, Gautama Buddha was teaching orally. He was teaching orally. So after the death of Gautama Buddha, there was no one to take care of this in charge. So everybody thought of organizing the congregation of religion, जिसको बुद्धिस्ट काउंसिल कहा जाता है. कृपा में you have written that like Gita, Quran and Bible. Yes, each and every religion has its one holy book, but at the same time every religion has its subsections also. Though Gita is the holy book of the Hinduism, but you will get a lot of ethics, holy scriptures in the Hinduism. Okay, so ma'am, you are right according to you. So पाली लैंग्वेज में ये जो है स्प्रेड किया गया था. Okay, so let me share. I will give a brief introduction of my previous presentation. Then we will look at the teachings, literature, sermons, आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म. क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाता है आर्किटेक्चर के बारे में, हमेशा यूपीएससी में क्वेश्चन आता है. प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में मैंने टेंपल का बारे में आर्किटेक्चर बताया था कि कौन कौन सा टेंपल कौन सा आर्किटेक्चर में होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी टेंपल हैज इट्स यूनिक आर्किटेक्चर. अब बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे तो उन लोगों का यूनिक आर्किटेक्चर है, उनका नाम क्या है, वो एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है. तो हम लोग देखते हैं. मेरा क्वेश्चन है उससे पहले, जैसे कि हिंदुइज्म का सिंबल है ओम. इस तरह से क्या आप मेरे को बता सकते हैं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जुदाइज्म जो एक लैंग्वेज है रिलीजियन, उसका क्या सिंबल है? जुदाइज्म, आप मेरे को बताइए. यस मैम, जगन्नाथपुरी के बारे में हमने डिस्कस किया था. यस, और मैं जब डिस्कस कर रहा था अदर रिलीजियंस के बारे में, जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, स्पेशली कामाख्या टेंपल के बारे में जब बात हो रही थी हमारा, और वो कामाख्या टेंपल के रिलेटेड मैंने वो कामाख्या टेंपल का रियल आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा आर्किटेक्चर में वो बनाया जाता है, वो कॉन्टेक्स्ट में पूरा इंडिया में जितना भी हमारा आर्किटेक्चरल फॉर्म है कि नॉर्दर्न ईस्ट में क्या होता है एंड वेस्टर्न में क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. ओके, सो देयर आर मेजरली 12 क्लासिकल रिलीजियंस इन द वर्ल्ड, and out of 12 classical languages, our topic today is Buddhism, which is the fourth largest religion in the world after Christianity, Islam and Hinduism. Okay, symbol of Buddhism, wheel. This is also called wheel of law, as Om is the symbol of Hinduism. The same way, this wheel with 8 spokes. 8 spokes are there, right? The wheel with 8 spokes is the symbol of Buddhism. Why 8 spokes? Because Gautama Buddha has given the 8-fold path
for getting nirvana, for getting enlightenment, for getting liberation. So each spoke represents one path. Okay, and let's go ahead and understand one by one. Give me the answer. Identify this monument. This monument is associated with the Buddhism. One of the oldest monuments in the world where people across the world used to come to practice and learn Buddhism. Please give me the answer. Identify this monument. What is this monument? Where is it? Because this monument has again renovated by the government of India to give the teachings of Buddhism to the world. And a new university has been built nearby this monument. Please give me the answer. What is this and where is it? Give me the answer. Nalanda University. Okay. Nalanda University. I got the answer. Nalanda University from Sujal Sujitra ji and Deval Doloria. Okay. Nalanda University. Where is it? Where is it? Nalanda University. Where is it? One of the oldest universities in the world. Most famous universities in the world. Where is it? In which state you will get Nalanda University? Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Sujal in Patan. Okay, Nalanda University, Takshashila University. These are the university of world record. These universities were the center place of learning for many people in the world. And in order to preserve it, protect it, and spread it, Government of India has made another university. Kumar Gupta built here monastery. Okay, very good, good going. So नालंदा यूनिवर्सिटी के बाजू में और एक यूनिवर्सिटी अभी बना गया है जहां पे with the contribution of 10 universities, 10 यूनिवर्सिटी 10 countries, क्योंकि जापान में आपको ये मिलेगा बुद्धिज्म, कोरिया में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, नेपाल में मिलेगा, कंबोडिया में मिलेगा, राइट, फिर श्रीलंका में मिलेगा, इंडिया में तो है ही। तो ये जो हमारा नियर बाई कंट्रीज है, ये सारे कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन को लेके ये जो है यूनिवर्सिटी का सेटअप किया गया है, जहां पे Wensang visited Nalanda University, very good, but the present university is a new one. Wensang visited Nalanda University, correct. अगर Wensang को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज हम बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे, very good. My next question to you: in which state the largest statue of Gautama Buddha will be built? In which state? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि बहुत बड़ा ए जायंटिक, ए बिग वन, बहुत बड़ा बनाया जाएगा एक स्टेचू गौतम बुद्ध का, कहाँ बनाया जाएगा? प्लीज गिव मी द आंसर. आप मेरे को आंसर कीजिए. देन वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन अगेन. कौन सा स्टेट, which government has declared to build the biggest statue of Gautama Buddha? Which government?
We are associated with the government right now, and it is Gujarat government. It will be built. The Gujarat government has declared that one day one of the biggest statues of the world will be of Gautama Buddha. Okay, so this is the answer. So you have given me the answer. Identify this symbol. ये सिंबल क्या बताता है, आप ये अगर जानते हैं तो इसका भी मेरे को आंसर कीजिए, क्योंकि हर एक रिलीजियन का एक सिंबल होता है. एंड गिव मी द आंसर ऑफ द सिंबल. देन a recap of our previous presentation. Gautama Buddha was born in 563 BC on Vaisakha Purnima day at Lumbini. उनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा दिन में, इसलिए वैशाख पूर्णिमा डे सेलिब्रेटेड होता है अक्रॉस द कंट्रीज वेयर बुद्धिज्म इज फॉलोड एंड नियर कपिलवस्तु इन नेपाल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You must remember 563 BC, number 1, and number 2, Lumbini near Kapilavastu in Nepal, which is the border of India and Nepal. His mother passed away at the age of, when he was only 7 days old. After the birth of Siddhartha, he lost his mother and he was taken care of or brought up by his stepmother Gautami. इसीलिए गौतम बुद्ध को कहा जाता है गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को कहा जाता है गौतम बुद्ध. उनका जो स्टेप मदर का नाम था गौतमी. And he got married at the age of 16 to Yasodhara, and they had a son. They were blessed with a son named Rahul. So this is the childhood of Siddhartha. उनको पता चल गया कि 563 BC में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में नियर कपिलवस्तु इन नेपाल, और उनका जन्म का ओनली 7 डेज के बाद उनका मदर का डेथ हुआ था. एंड फिर बाद में एट द एज ऑफ 16 उनको शादी किया गया यशोधरा के साथ, और उनका एक सन था जिनका नाम था राहुल. फिर लाइफ ऑफ बुद्धा. फिर हमको मालूम है कि he had been given all the amenities and all the facilities. He had never experienced what is unhappiness. He had never experienced pain and everything. He had never experienced challenges. और पूरा लाइफ जो है उनको माहौल में रखा गया. 3 अलग अलग पैलेस बना गया था. विंटर सीजन के लिए ठंडी से बचाने के लिए एक पैलेस था, रेनी सीजन में रेन से बचाने के लिए और दूसरा एक पैलेस था, और समर सीजन में समर से बचाने के लिए और एक पैलेस था. So his father gave him all the facilities which was possible to him. So he was a prince with almost all the extraordinary luxuries in life. फिर in one day जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बाहर की दुनिया जाना है, कभी बाहर गए नहीं थे, और जब वो बाहर गए तो उन्होंने जो सीनरी देखा उससे उनका पूरा परिवर्तन हो गया, और वही उनका जिंदगी के परिवर्तन का कारण है. उन्होंने सबसे पहले एक ओल्ड पर्सन को देखा और उनको पूछा कि ये जो ओल्ड पर्सन है ऐसा क्यों है, तो उनको आंसर मिला. उनका जो चैरियट था उन्होंने उसको आंसर दिया कि हर एक इंसान को एक दिन यही सिचुएशन में आना पड़ता है. दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड दिस इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ लाइफ. देन वो फिर आगे गए, और आगे जाने के बाद उन्होंने देखा एक बीमार इंसान को देखा. फिर वो दुखी हो गए. उन्होंने पूछा ये बीमार ऐसा क्यों है आदमी. जो बीमार जो इंसान था he was not very happy, was not healthy, lean, thin, unhappy and miserable man. और उनको आंसर मिला दिस इज ऑल्सो रियलिटी ऑफ लाइफ. बॉडी है तो बीमार होता ही है, और ये इसका दुख है.
अगेन ही गॉट कंफ्यूज। फिर वो लोग अब आगे गए और आगे जाने के बाद उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा और उनको पूछा कि ये क्या है, तो उनको आंसर दिया गया कि ये जो है जिंदगी का लास्ट है, डेथ इज फाइनल स्टेज ऑफ आवर जर्नी, वी आर इमोर्टल, दिस बॉडी इज इमोर्टल एंड वी डाई वन डे, राइट। सो lastly, उन्होंने he witnessed with a spiritual leader who was very happy, was very healthy, और उन्होंने देखा उनसे वो इंस्पायर हुए। तो ये 4 सीन देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये जितना भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उनको निकालना है। इसीलिए इन वन नाइट he left his palace at the age of 29 while his wife and son were sleeping। थोड़ी समय के लिए वो इमोशनल हो गए। उन्होंने सोचा कि वो उनको मिल के चले, क्योंकि उनको मालूम था कि वो दोबारा फिर पैलेस में रिटर्न नहीं होंगे। हालांकि बाद में उनको फिर से रिटर्न हुए थे, वो अपना पैलेस में आए थे। दैट इज अनदर स्टोरी, बट यस ही had left his palace at the age of 29 with Channa, the charioteer, and his favorite horse Kantaka। बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध का चैरियट का नाम क्या था, चैरियटर का, और उनका घोड़े का नाम क्या था, आपको याद रखना है। Each and every sentence is very very important here। और कौन सी एज में उन्होंने डिपार्ट किया था अपना पैलेस? सो द आंसर इज एट द एज ऑफ 29। क्यों किया था? टू इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उन्होंने जो मिजरी देखा, जो प्रॉब्लम देखा, जो दुख देखा, उनके सॉल्यूशंस के लिए वो घर छोड़ के चले गए। और यही जो डिपार्चर है उसको द ग्रेटेस्ट डिपार्चर कहा जाता है, एंड इसको द ग्रेट रेनाउंसिएशन भी कहा जाता है, और उसको महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। आपको ये 3 वर्ड याद रखना है। सो he left his pleasurely palace and went in search of knowledge, went in search of truth। Then he went to various places for 6 years। वो बहुत सारी जगह पे गए, बहुत सारे लोगों को मिले, और उनका जो आंसर जो चाहिए था उनको आंसर नहीं मिला। He learned meditation from his first guru and he was not satisfied and he did not get the answer of his question। Then he went to another one, he met another guru, दूसरा गुरु को उन्होंने मिले, and उनका आंसर वहां पे भी नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि मेडिटेशन इज द लास्ट सोर्स टू गेट द नॉलेज, टू गेट the solution of his problem। so उन्होंने सारे गुरु को छोड़ के वो चले गए और एक पीपल ट्री में बैठ गए। He sat under the people tree in बोध गया in बिहार। वो वहां पे वो बैठे और वो डिटरमाइंड थे कि वो कुछ भी हो जाए, वो अपना जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन वो लेके ही नहीं गए। He treated himself very negatively। वो अपना शरीर को बहुत पेन दिया उन्होंने। Without food, without water, he experienced lot of pains to his body। ऐसा माना जाता है कि वो कभी एक राइस खा के रहते थे और जितना मैक्सिमम पॉसिबल है अपना बॉडी को उन्होंने टॉर्चर किया कि इससे शायद उनको एनलाइटेनमेंट मिलेगा।
So he continued this practice for a long, but he did not get nirvana and he did not get any enlightenment. उनको पता चला कि उनको तो कोई नॉलेज अभी तक मिला ही नहीं है, पर जब वो पीपल ट्री में बैठे थे, he continued sitting there for approximately 49 days. 49 days. फिर जब वो मरने का ही सिचुएशन आ गया था, he was about to die, और उसी टाइम पे उनका जो है एनलाइटनमेंट होता है, और उसका प्रूफ ये है कि जब वो अपना हाथ जमीन में रख देते हैं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरप्राइजेस होता है, जैसे कि पूरा धरती में भूकंप आ जाती है, ऊपर से फूल गिरने लगते हैं और सारे क्रिएचर्स हैप्पी होना शुरू हो जाते हैं। सो इससे पता चला उनको कि ही इज ऑलरेडी एनलाइटेंड, ही हैज गॉट एनलाइटेंड। पर वो उनके लिए इतना इजी नहीं था। मारा, द गॉड ऑफ विश, जो सबको डिस्टर्ब करता है, वो बहुत कोशिश किया टू डिस्ट्रैक्ट गौतम बुद्ध फ्रॉम हिज मेडिटेशन। मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। उन्होंने जब वो मेडिटेशन में बैठे थे, उनको बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिखाया, लग्जरियस लाइफ दिखाया कि शायद वो उसको देख के मेडिटेशन छोड़ देंगे, पर ही वॉज डिटरमाइंड, he was determined that he will not get up unless and until he gets the nirvana or he is enlightened. फिर वहां ने he sent his 3 beautiful daughters to distract him. Again, it was a big failure. It was a big failure. So he tried, Mara tried to distract him in many forms, but he failed, and ultimately उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया और ज्ञान का प्राप्त हुई। फिर बाद में वो कंफ्यूज हो गए कि इसके बाद वो क्या करेंगे। उन्होंने सोचा कि ये जो नॉलेज है उनको अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो ये दुनिया वाले विश्वास नहीं करेंगे। The whole people, the people across the world, they have their own ego. वो लोग बोलेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो लोग मेरे को डाउट करेंगे। ऐसा सोच के गौतम बुद्ध जो हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे को इसको किसी को बताना नहीं है। फिर बाद में वो वहां पे और बहुत दिन बैठे थे वो पीपल ट्री का नीचे, क्योंकि he was experiencing the highest pleasure, the highest joyfulness. He was in a state of highest bliss. So वो वहां पे बैठना और समय ज्यादा टाइम देना चाहते थे। At the same time, ऐसा ब्रह्मा का वहां पे आना हुआ और उन्होंने बताया कि आपको जो नॉलेज मिला है, जो एनलाइटनमेंट मिला है, जो निर्वाणा मिला है, ये सभी लोगों को स्प्रेड करना है। तो उनके बाद वो गए लोगों को मिलने के लिए और सबसे पहले एक आध्यात्मिक को मिले, आध्यात्मिक पर्सन को मिले और उन्होंने बताया, पर उनको वो बात समझ में नहीं आई, एंड इट वाज ए फेलियर। एंड द फर्स्ट sermon and the first teaching or first Buddhist teaching given by Gautama Buddha is called turning of the wheel of law or dharma chakra pravartan. Is very very important. बहुत सारा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग में हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जब रिलीजियस ऐसे लिखना है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होता है उसके बारे में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एमसीक्यू में इससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है और उनका लास्टली एट द एज ऑफ 18 ही अटेन्ड महापरिनिर्वाण। निर्वाणा तो उनको पहले से मिला था, पर डेथ के बाद
He attained Mahaparinirvana at Kushinagar in 483 BC. At the time, he was 80 years old. So this is a very simple recap of my previous presentation. जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक टेबल में हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। प्लेस कौन सा इंपॉर्टेंट था और बुद्धिज्म में सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रिलीजन में सिंबल का इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया हिंदुइज्म में ओम का है, इस्लाम में स्टार विद क्रेसेंट का है, राइट। क्रिश्चियनिटी में क्रॉस सिंबल है। सो ये जो सभी हैं ये सारे सिंबल का अपना एक इंपॉर्टेंस है, मीनिंग है। तो लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है और इसको सिंबलाइज करता है लोटस एंड बुल। बहुत बार जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है जो बुल है वो क्या सिंबलाइज करता है बुद्धिज्म में, तो वो बर्थ को सिंबलाइज करता है। फिर बाद में ग्रेट डिपार्चर, जब वो अपना पैलेस छोड़ के चले गए जिसको ग्रेट डिपार्चर कहा जाता है, वो महाविनिष्क्रमण जिसको कहा जाता है वो क्या सिंबलाइज करता है, हॉर्स से सिंबलाइज होता है। अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन एनलाइटनमेंट जब उनको बोध ट्री में मिला, बोध गया में, वो निर्वाणा से फेमस है और बुद्ध ट्री जो है उसको सिंबलाइज करता है। एंड सारनाथ जहां पे उन्होंने पहली बार अपना टीचिंग्स दिया था वो जिसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, वो व्हील सिंबलाइज करता है। एंड कुशीनगर जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, डेथ जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, वो स्तूप सिंबलाइज करता है। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म and each and every symbol is very very important. We should know it. Four number tools के बारे में we have already discussed. So let's go ahead. Eightfold path के बारे में भी इन previous presentations मैंने आप लोगों को बताया था। हमारा बिलीफ राइट होना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस राइट होना चाहिए, हमारा स्पीच राइट होना चाहिए, हमारा एक्शन सही होना चाहिए, हमारा लिविंग का अप्रोच सही होना चाहिए, हमारा एफर्ट राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, रिकलेक्शन हमारा पॉजिटिवली होना चाहिए और मेडिटेशन हमको करना चाहिए। अगर एक जो फोल्ड पाथ है ये जो है बुद्धिज्म का मूल मंत्र है। अगर कोई पर्सन यही एट फोल्ड पाथ को पॉजिटिवली फॉलो करता है, रिलीजियसली फॉलो करता है, तो ऐसा माना जाता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है और वो लाइफ एंड बर्थ से वो मुक्त हो जाता है। सो एट फोल्ड पाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बुद्धिज्म का एट फोल्ड पाथ नहीं है, कि इनमें से कौन सा एट फोल्ड पाथ है। सो एट fold path or Ashtanga Marga is very very important in Buddhism. Then Buddhist Council, total चार काउंसिल हुआ था और काउंसिल क्यों हुआ था I have already discussed. गौतम बुद्ध का मृत्यु के बाद उनका रिलीजियंस को कोडिफाई करने के लिए, लिखने के लिए, कॉम्बाइन करने के लिए जितना भी मीटिंग्स हुआ था उसको बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहा जाता है। और उसमें चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। द सेम वे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, किनके द्वारा हुआ था और कहां पे हुआ था। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, all four councils are very very important. So the first one being held around 483 BC,
under the patronage or presiding of King Ajatasattu. अजातशत्रु का सुपरवाइजरी में पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो सभी लोगों को बुला गया था कि ये जो लिटरेचर है, जो टीचिंग्स है, इसको किस तरह से कोडिफाई किया जाए. सो यू हैव टू रिमेंबर 483 BC and King Ajatasattu, very very important. And बाकी जो 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, it held around 483 BC, 250 BC and 72 AD respectively. Let's see, we have got limited time, so in my next session possibly I will continue the presentation. So 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल लोग हमने देख लिया, और ये जो काउंसिल हुआ था इसका ऑब्जेक्टिव था to arrive at a consensus on how teaching of Buddhism could be spread further. इसका जो ऑब्जेक्टिव था, सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिस्कशन किया कि ये जो बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, जो बुद्धिज्म का लिटरेचर है, जो बुद्धिज्म का टीचिंग्स है, उसको पूरी वर्ल्ड में किस तरह से स्प्रेड किया जाए. So this is the first Buddhist council, and we have got 3 more Buddhist council. So in my any future presentation, we will accomplish it, we will finish it. So let's get back to the presentation. Okay, so very good evening all, and if you have any doubts, any questions, please right now I'll give the answer. And if you want to give any suggestions, feel free. Your suggestions are very very important. Mahavir Swami performed here 14 Chaturmas. Okay, very good. Wensan took 657 book from Nalanda to China. Wow, very good information. Yes, you all are aware of it. So for any question, doubt, query, feel free to write me on my email ID rohitsika@geniusschool.co.in. You can call me on my number. You have got my number, and let's enjoy the whole process of our UPSC, GPSC, NDA and CDS, and spread this message, because Genius Lakshya is a unique initiative for everybody in Gujarat in particular and India in general. It is for all. ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप सबको यहाँ पे इन्वॉल्व कीजिए. ये सभी लोगों को बेनिफिट होगा, irrespective of any examination they are giving. अगर वो लोग एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो ये जो नॉलेज है उनको और बेटर बनाएगा. सो जीनियस लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है, सभी लोगों का लक्ष्य को पूरा करना, whether it is UPSC और GPSC और आर्मी नेवी एयरफोर्स. हम सभी लोगों को टीचिंग्स करेंगे, मोटिवेट करेंगे और हमारा देश को और बेहतर बनाएंगे. हमारे देश को बहुत अच्छा ऑफिसर्स का जरूरत है. आप लोग अपना फेस ग्रुप जितना भी अपना सोशल मीडिया है वहां पे मैसेज कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को बताइए, एंड लेट्स एंजॉय दिस जर्नी वेरी हैप्पीली टुगेदर. जितना ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे इतना बड़ा सेवा होगा, इतना बड़ा भला होगा. कर भला तो हो भला. हमको करना क्या है, बस लोगों को जुड़े जाना है और एक दिन ये सभी लोग तक पहुंच जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. सी यू इन माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. सी यू. भारत माता की जय. जय हिंद.